as Robert used to say, very lately, as 5, 6 years back only, we got current. And also communication is very bad, as Santosh and Robert have visited my house and they know the communication, but now it's little better. You know, having come from that village, we always have that mentality that we will be nowhere compared to the people who are in, urban areas, because rural pocket people will always think smaller. So I used to think myself to be like an ordinary person, and I was not that good at studies. I was not that good at studies, but I was very good at sports. I love sports, and that's how actually it kept me going positively in life. And after graduation, I thought of having a job, but then looking for a job, it was not easy in the year 2000. And I started as an ordinary teacher, teaching small boys and girls, and I was having great time with children. But I was not happy with the pay. As you all know, the teacher's private job is not that easy, and you don't get good pay. So I was looking for an option where I can get better grade, I mean, better option. And that's how I joined from one job to another. Ultimately, I got into NRHM. There was a government, organization called NRHM. And in that, I felt that I was in a good job. And I was looking for this kind of job. I was very happy, and then got married. And I was so excited, having got this job. As many people, when they get first job like this government sector, they are all excited. But I tell you, my dear friends, working in a government sector, I realized one thing is that, I was not growing actually. I was not growing, though I was having some training and a lot of people meeting and all that. Only that you get a lot of respect. Respect is something that you get in this sector, where all the ASHA workers and ASHA supervisors will salute you and tell you so many good things. But then ultimately, the income that we used to get was not that enough to survive a family. I always have a complaint at the end of the month. I always say this to the people who are in a job. At the end of the month, you get paid. You know, at the end of the month, the money that you get paid gets over by 20 onwards. And that's the time your real picture, your real character comes out. We always want to be a better person to other people, but when it comes to money, that's why I always say, no, money is not everything, but close to everything. you know Close to everything, my dear friends. This is how I was struggling. And that was the time, like an angel, Mr. Robert called me. And I tell you, my dear friends, he knows me before also, because I was already in network marketing as a job holder. I was working for more than 7 years in network marketing before Magnessa. And I had a lot of experience in that field, but then I had no income. I don't know why. I cannot answer to that, because I was struggling in that company. I was enjoying the training that I was provided in that company. I used to travel to different parts of India for the trainings, but my bank balance was not at all increasing. Instead, whatever I was getting from my job, I was spending and spending. That's how I decided to leave the network marketing and be in the job only. I know there are some of you who start network marketing and you try and you feel that it's not worth doing and you go back to job, right? It happened to me, my dear friends. Okay. So that's how I thinking about job and all, I was struggling. तो जॉब में जितना कोई, आप जानते हैं कि जॉब के वाले को क्या प्रॉब्लम होता है. यू नो नेटवर्क मार्केटिंग मैंने स्टार्ट किया था, उसमें सक्सेस नहीं हुआ, फिर मैं जॉब में गया. बहुत लोग यहाँ में हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग किया है, एंड बहुत लोग, आप लोग जानते हैं, आप लोग का फ्रेंड सर्कल, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट किया था फिर जॉब में चला गया. सो मेनी पीपल, एंड देन अगेन कमिंग बैक. एंड दिस हैपेंड टू मी. सो व्हेन रॉबर्ट कॉल्ड, उसने जब बुलाया ना, ही वॉज वेरी स्मार्ट, इज वेरी यंग एंड डायनामिक एंड ही वॉज वेरी स्मार्ट. उसने क्या किया, हम लोग का डायरेक्टर जो सृजित नायर आया था गुवाहाटी में, ही गिव द फोन टू हिम एंड मिस्टर सृजित नायर जस्ट फ्यू वर्ड्स, वो इतना सॉफ्ट वर्ड्स में बोला हमको. आई लेफ्ट एवरीथिंग इन द ऑफिस, आई केम डाउन टू गुवाहाटी. गुवाहाटी में आने के बाद में मैंने प्लान देखा, ओनली 5 मिनट्स प्लान. जो सृजित नायर ने प्लान दिखाया है ना, डेली इनकम, ये वाला वीकली इनकम, ये सारा प्लान देख के मुझे खुद को कॉन्फिडेंस में आ गया कि हाँ, इसमें तो पैसा मिलेगा 100%. क्योंकि मैंने ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग कर चुका था. आई हैव ऑलरेडी डन इट इन नेटवर्क मार्केटिंग, अदर कंपनीज.
around 2 3 companies, and I realized the difference, something different I found, and that is money. And also there is a growth here, and also I saw the products, because a unique product called YT I never heard. मैं सोचा कि अरे YT तो पहला बार सुन रहा हूँ लाइफ में, एंड ये नया चीज ना लोग को पता नहीं है, एंड वी आर गोइंग टू रॉक। ये कंडीशन लेके मैंने तुरंत डिसीजन लिया। मैंने सर को बोला कि आई एम इनटू इट। मैंने और एक बड़ा डिसीजन लिया। द बिगेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ वाज टू क्विट माय जॉब। I tell you, my dear friends, quitting job was not easy. The decision, the last line which Audrina was talking about, the moment, in moments of decision, destiny is shaped. Yes, this is very much true. The decision I took that day has changed me completely, my dear friends. उस दिन मैंने जब डिसीजन लिया ना, मेरा खुद के लिए डिसीजन नहीं लिया हूं. It was a decision for the today I have 39,000 people friends. 39,000 मेरा ऑर्गेनाइजेशन में है. उस दिन का डिसीजन वो डिसीजन के लिए आज है my dear friends. That is why I'm telling you, my dear friends, taking decision is right time, right company is very important. तो मैंने डिसीजन लिया कि ये बिजनेस हमको करना है. But I tell you, my dear friends, जब भी आप डिसीजन लेते हो, there is always a challenge, right? रिस्क फैक्टर आ जाता है. जहां रिस्क है ना वहां पैसा है बोलते हैं. Where there is a risk, there is a money. So I took a risk, of course, calculative risks, because I knew network marketing is working. I knew it, but I found an organization called Magnessa having all the things required to be successful. पहला मैंने देखा उसका कंपनी प्रोफाइल. मैंने देखा कि यहां में कौन लोग एक्चुअली कंपनी चला रहा है, जिसका जो एक्सपीरियंस, मिस्टर फिरोज खान, मोर देन 21 इयर्स माय डियर फ्रेंड्स, उसको मैंने देखा. फिर मैंने देखा श्रीजीत नायर, डाउन टू अर्थ. लाइफ में अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग जितना भी हम किया था आगे में कभी नहीं देखा था. डायमंड्स का दूर के बाद डायरेक्टर्स को कैसा आपको पर्सनली मिलता है ना, ये कभी नहीं देखा था मैंने. आई नेवर सो लाइक दैट इन नेटवर्क मार्केटिंग. And these people, I met them personally, gave me a lot of hope, lot of confidence. वही कॉन्फिडेंस से मैंने स्टार्ट किया बिजनेस माय डियर फ्रेंड्स. मैंने डिसीजन लिया कि हमको जॉब छोड़ना है, हमको करना है. एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड माय डियर फ्रेंड्स. एंड देन द रियल फील्ड वर्क स्टार्टेड. पैसा नहीं है, कमाई नहीं हो रहा है, नो इनकम इन द बिगिनिंग स्टेज, नो प्रॉपर ऑफिस, नो प्रॉपर प्रोडक्ट. कभी कभी आता है, कभी कुछ नहीं, इनकम भी नहीं है, 100 rupees, 200 rupees in a month sometimes. A lot of struggle I've seen in these diamonds like Mr. Robert and Santosh. I would say Santosh lifestyle. जब संतोष जब गुवाहाटी में आया ना, उसका लाइफस्टाइल हमने खुद देख चुका है. कुछ नहीं था, no proper dress as he always tells. He was a beggar, he says always. हाँ, वो बेगर ही था. मेरा हिसाब से तो वो बेगर था, क्योंकि मैंने जॉब से बैकग्राउंड से आया हूं. Always, walking. Always both of them, Mr. Robert and Santosh, will be walking. No cars, no bus, no even bus में उठते नहीं थे, और पैदल जाते थे 4-5 किलोमीटर्स. And that I have seen them. But मैंने और एक चीज देखा कि जो लोग लीड कर रहे हैं, जैसे कि श्रीजीत नायर, इसका एक्सपीरियंस मैंने देखा था. उसको विश्वास करके मैं देखा हम लोग बिल्ड करेंगे. तो हमको जब रॉबर्ट एंड संतोष बोला, डोंट वरी मैन, वी विल बिल्ड दिस, एंड दे वर ऑलवेज पुशिंग मी, आपका एक्सपीरियंस है. तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको दिया गया ना, वो बहुत मैटर करता है मेरा लाइफ में. वो लोग का एक विश्वास हो गया कि मेरा ऊपर में, प्रकाश आप हो तो हम कर पाएंगे, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग. एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माय डियर फ्रेंड्स. एंड पीपल, आई टेल यू व्हाट पीपल वर सेइंग टू मी, अरे प्रकाश क्या हो गया तुमको, पागल हो तुम, जॉब को छोड़ दिया, अगेन बैक टू नेटवर्क मार्केटिंग. आप तो चेन बिजनेस फिर लेके आया हो. ये जो चेन बिजनेस आप बता रहे हो ना, ये चेन बिजनेस नहीं है, ये लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है.